So, in this class, we will learn about structure factor. What is mean by structure factor? See, simply structure factor is nothing but the point. The structure factor is nothing but the point, or the point which is about the structural identification, which is about what beta? Structural identification. What is mean by structural identification? मतलब कि हमारा जो कुछ भी सॉलिड होता है या फिर उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल होता है, वो क्रिस्टल का या फिर सॉलिड का जो कुछ भी स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रक्चर कैसे क्या डिटरमाइन करते हैं हम, ये हम पढ़ते हैं इस स्ट्रक्चर फैक्टर में। तो स्ट्रक्चर फैक्टर हम देते हैं सिंपली एक डायफ्रैक्टोमीटर। स्ट्रक्चर फैक्टर हम किस चीज पर बता सकते हैं? तो स्ट्रक्चर फैक्टर वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डायफ्रैक्टोमीटर फॉर्मूला। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डायफ्रैक्टोमीटर फॉर्मूला। सो व्हाट इज दैट डायफ्रैक्टोमीटर फॉर्मूला? वेट so whatever this structure factor is there, this structure factor can be determined by using simply a diffractometer formula. What is that diffractometer formula which we can use for the determination of structure factor? That formula is in front of you, and what is that? It is nothing but FHKL. What is that? FHKL. That FHKL is equals to summation over J. Summation over J. Fi E J phi HKL of J. Phi HKL of J. All these are nothing but the J values. What is this? J. It may look like I, but it is nothing but J. What is that? J. So what J म्हणजे काय? Jth molecule साठी असं म्हणून. Okay. So whatever these molecules are there, for these molecules what we are representing the structure factor, and whatever the structure factor is there, that structure factor can be explained on the basis of formula, diffractometer formula. That diffractometer formula is nothing but FHKL. What is that beta? FHKL. And that FHKL is equals to summation over jth molecule of Fi EJ e raised to J phi HKL of J. Now ये जो कुछ भी अब आप लोग बोलोगे कि मैम व्हाट आर द टर्म, ओके वी आर ओके विद द इक्वेशन. नाउ यू मे आस्क मी, मैम कैन वी डिराइव दिस whatever this equation is there, can we derive it? Yes, you can derive this equation, but see, for our studies they are not expecting the equation. That is why do not try to derive all this equation. Just to mug up this equation, whatever the equation they have stated, that equation is equals to FHKL is equals to summation over I Fi EJ phi HKL of J. So whatever this equation is there, this equation is representing us Fi is nothing but this Fi, this one, हे जे काही Fi आहे, this Fi is nothing but the power of scattering value. What is that? Power of scattering value. मतलब क्या? मतलब कि आपके जो कुछ भी हमने, जैसे कि ब्रैग्स इक्वेशन देते टाइम हम लोगों ने जो कुछ भी रेज कंसीडर किए थे, इंसिडेंट रेज जो आ रहे थे, देखिए मैं लिख कर बताने की कोशिश करती हूँ। ये जो कुछ भी अब ब्रैग्स इक्वेशन में ये जो कुछ भी हमारे प्लेन्स थे, उनमें ये जो कुछ भी हमारे रेस थे ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे, और बाद में हमारे इस डीप मतलब कि हमारे इस इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी पे गिर के बाद में वो रिटर्न बैक हो रहे थे, जिसको कि हम स्कैटरिंग फेनोमेना बोलते हैं, जिस पर से कि डायफ्रैक्शन वगैरह हमें मिलते हैं, डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो अब ये जो कुछ भी हमारा ये जो कुछ भी हमारे स्ट्रक्चरल फैक्टर डिटर्मिनेशन है, तो ये स्ट्रक्चरल फैक्टर डिटर्मिनेशन में अब यहाँ पर हमें जो कुछ भी Fi वैल्यू है, इट इज नथिंग बट द पावर ऑफ स्कैटरिंग वैल्यू. देन आफ्टर यू मे आस्क मी, मैम व्हाट इज मीन बाय दिस phi HKL वैल्यू? सो phi HKL वैल्यू इज नथिंग बट द phi HKL of J is nothing but this phi HKL of J is nothing but 2 pi HXI plus KYI plus LZJ. मतलब कि simply it is nothing but the angle. It is nothing but the angle which is towards HKL. मतलब मिलर इंडाइसेस जैसे हम देते हैं वैसे ही तीनों एक्सिस की तरफ जो कुछ भी उसका एंगल होगा वो एंगल. एंड नाउ व्हाटएवर दिस समेशन
here this summation. ये आप लोग बोलोगे कि मैम why you have sum up all these things, because whatever this summation sign is here, this summation sign is informing us or it is telling us simple information regarding the all the atoms which are there in our solid. There all the unit cells summation it is there. अच्छे से सुनो, एक जो कुछ भी आपका सॉलिड होगा उस सॉलिड में आप क्या कर रहे थे सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डायफ्रैक्शन में, आप सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डायफ्रैक्शन में सिंपली सिंपली सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डायफ्रैक्शन में आप लोग यूनिट सेल मिल रहे थे आपको, तो वो जो कुछ भी यूनिट सेल थे उसमें से जो कुछ भी स्ट्रक्चरल फैक्टर है, मतलब कि एक यूनिट सेल देन दूसरा यूनिट सेल तीसरा यूनिट सेल, ऐसे यूनिट सेल रिपीट 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 हो करके ही आप लोगों को आपके सॉलिड का स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री मिलने के लिए मदद होती है. दिस इज all about structure factor. I'm expecting that you guys are pretty clear with this, because whatever the structure factor is there, structure factor is dependent on this equation. And if you guys are clear, then I would like to move towards the next point. Can I move? Yes? Can I? Yes, can I move to the next point? Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, after this, okay. Wait, I'm loading this slide. After this structure factor, once you got clear with the structure factor, then after we will go to the electron density. As we have discussed this thing before also. What is mean by electron density? Electron density is nothing but a cloud of an electron which is above the nucleus. What is mean by electron density, guys? Electron density is nothing but the cloud of your electron. What is electron density? It is nothing but the cloud of your electrons. On what? On your nucleus. On your nucleus of कौन? Atom. मतलब क्या? समझने की कोशिश कीजिए. ये जो आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. अब ये जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो कुछ भी क्लाउड होता है, वो क्लाउड आपके इस न्यूक्लियस पे, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. मतलब जो कुछ भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अबाउट कहां पर वो इलेक्ट्रॉन सिचुएट होते हैं. ऑब्वियसली एटम में सेंटर को आपका न्यूक्लियस होता है, उसके रिगार्डिंग उसके अकॉर्डिंग आपके ये जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड जो कुछ भी होता है, उसी को हम बोलते हैं सिंपली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. आर यू गाइज फॉलोइंग? आर यू गाइज गेटिंग क्लियर? समझते करे बाबा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. what electron density is there? This electron density can be explained. अच्छे से सुनो सबके सब. Whatever this electron density point is there, this electron, now you may ask me, ma'am, whatever this electron density is there, we are clear with one atom is there, that atom is having nucleus at the center, then after that atom is surrounded by the electrons. Now जब कभी भी ये atoms electron से surround होते हैं, तो उसी point को हम बोलते हैं electron density. अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये जो कुछ भी electron density है उसको represent करें तो कैसे करें? तो उसको represent करने के लिए जो कुछ भी आपकी FHKL value है, क्या है? FHKL value. What was FHKL value? Have you heard FHKL before today? Before just now? मिलर इंडायसेस मध्ये अजून तेवढ्या मागे कशाला जाता रे? DHKL होतं ना, स्ट्रक्चर फॅक्टर. Yes, we have learned this FHKL in just before point, that is nothing but the structure factor, and whatever that FHKL is equals to, that FH, with the help of this FHKL value we can determine electron density or electron distribution. So electron distribution का जो कुछ भी क्लाउड होगा वो हम देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से. अब आप लोग मुझे बोलो, डेंसिटी जो कुछ भी हम बताते हैं, तो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का जो कुछ भी नोटेशन है, वो नोटेशन इज रो
Yes, that is nothing but rho. Rho R is equals to 1 upon V म्हणजे volume झाला हा, and then after FHKL is nothing but the structure factor. And what is that structure factor? E raised to minus 2 pi, and that is nothing but sorry, it is nothing but simply HX KY LZ means what? आपके सारे कोऑर्डिनेट्स पे उनके कितने कितने डिस्टेंसेस पे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये जो कुछ भी टर्म्स है इन्वॉल्व होते इस इक्वेशन में, वेट, ये जो कुछ भी टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे इस इक्वेशन में, तो ये जो कुछ भी टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो इन टर्म्स हम दे सकते हैं सिंपली इस इक्वेशन में। यस, लेट मी कंटिन्यू विथ नेक्स्ट पेन। सो ये जो कुछ भी हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे जो कुछ भी रो वैल्यू है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम बता, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताने के लिए हमने अभी अभी एक फॉर्मूला दिया है जो आपके राइट इन फ्रंट है। तो अब इस फॉर्मूला में सारे के सारे क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, तो V इज नथिंग बट द वॉल्यूम, V इज नथिंग बट द वॉल्यूम of your unit cell whose electron density we want to give. Then after FHKL is nothing but the, yes guys, FHKL is nothing but the structure factor, okay, which is giving us simply the relationship between your electron density, which is giving us the relation for electron density. And now whatever this electron density is there, this electron density means rho R and FHKL, both of them are, sorry, वेट, हा ह्याला इकडचं पण घेतलं गेलं. सो whatever this FHKL is there, this FHKL value means structure factor and electron density, both of these are related with each other, which is known as, listen very very carefully guys, whatever this electron density is there, this electron density is related with structure factor FHKL, and whatever their relationship in between is there, this is known as Fourier synthesis of electron density. इसी को हम क्या बोलते हैं? Fourier synthesis of electron density. इसी को हम क्या बोलेंगे रे? Fourier synthesis of electron density. Let me show you with the, ये जो कुछ भी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसी को हम बोलते हैं फूरियर सिंथेसिस। लेट मी टेक अनदर सिंबल। So whatever this electron density is there, this electron density and structure factor के relation को हम बोलते हैं Fourier synthesis of electron density. What can we say? Fourier synthesis of electron density. And now if you want to represent this electron density, for example NaCl crystal, then you can represent this in NaCl electron density for your Cl minus ion. It can be more than that of Na plus ion. Why? Because Na plus में जो कुछ भी electrons है, number of electrons in Na are simply 11. Na बोला मैंने, not Na plus. And whereas if you go towards for Cl, it is nothing but the 17. मतलब उसके atomic number पर से आप easily उनमें जो कुछ भी number of electrons है वो बोल सकते हो। क्यों मैं आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉन के बारे में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोल रही हूँ? क्योंकि जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हो तो किसकी डेंसिटी बता रहे हो बेटा जी? आप किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता रहे हो। किसकी डेंसिटी बता रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बोल रहे हो। और ये जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एज यू कैन know from Na and Cl, you can have their ions, that is cation and anion. And whatever this cation and anion are there, as everybody from you knows very well, Cl is having the 17 electron plus C, if it is converting into Cl minus, means it is having 18 electrons, whereas sodium is having only 11 electrons, where when it is converting into Na plus, at that time it is converting into 10 number of electrons. Wait, huh? थोडं छान लिहून दाखवते. Na plus, and when it is in Na plus, at that time it will have only 10 electrons. Means अब मुझे बोलो 18 इलेक्ट्रॉन वाला क्लाउड बड़ा होगा या 10 इलेक्ट्रॉन वाला क्लाउड बड़ा होगा? Yes, obviously
Yes, obviously. 18 इलेक्ट्रॉन वाला जो कुछ भी क्लाउड है वो 18 इलेक्ट्रॉन वाला क्लाउड विल बी द ग्रेटर वन और हायर वन. Is that okay, guys? And this is all about electron density. This is all about what? Electron density. I think you guys are clear with this point. Yes or no? If you have any doubt, you can ask me. I'm right here, which waiting for your replies. Yes. Are you guys clear? बापरे. Yes, ma'am. Yes, Are you ma'am. guys? Yes, ma'am. Okay, okay, okay.